Welcome, Shafa networking concepts based on CCNA and CCNP. Today topic is extended ACL with configuration. How to configure extended ACL between the routers. What do you mean by extended ACL? एक्सटेंड ACL हम इसलिए यूज करते हैं कि हम किसी भी ट्रैफिक को हम अलो कर सकते हैं या डिने कर सकते हैं यूजिंग द राउटर्स. Now extended ACL is applied on routers. Extended ACL हम कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं राउटर्स. ये मैं एक अच्छे एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा और उसके बाद में उसी एग्जांपल के जरिए मैं आपको लैब करवाऊंगा. मान लो एक राउटर दो है, R1 राउटर है एंड R2 राउटर्स. This is R1 router and this is R2 router. दोनों राउटर स्विच के साथ कनेक्टेड है. ये स्विच 1, स्विच 2. ओके. और ये R1 R2 आपस में कनेक्टेड है और स्विच के साथ मान लो दो पीसीज कनेक्टेड है और इस स्विच के साथ भी दो पीसीज कनेक्टेड है. PC1, PC2, PC3, PC4. अब ये भी एक स्विच के साथ कनेक्टेड है. ओके. मान लो दो पीसेस कनेक्टेड है और एक स्विच जो है कनेक्टेड है. हमें पता है स्विच काम करता है एक ही नेटवर्क पे, मगर हम ये मान के चले जो स्विच है हम इसको यूज एज ए लॉजिकल टू स्विचेस यूज करेंगे. उस प्रॉपर्टी का नाम है वीलैन. वीलैन तो हम इसमें दो वीलैन बनाएंगे, वीलैन 10 एंड वीलैन 11. वीलैन 10 के साथ PC1 कनेक्टेड है एंड वीलैन 11 के साथ PC2 कनेक्टेड है. हम वीलैन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको दिखाऊंगा. इसी तरह इस स्विच में भी हम दो वीलैन बनाएंगे, वीलैन 12 इसके साथ PC3 को कनेक्ट करेंगे एंड वीलैन 13 को इसके साथ हम PC4 को कनेक्ट करेंगे.
ओके, तो हमें पता है आईटी डिपार्टमेंट जो है इट विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद सेल्स डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट विल बी जो R1 का आईटी डिपार्टमेंट इट विल बी कम्युनिकेटेबल विद सेल्स डिपार्टमेंट। बट व्हाट वी वांट, हमें ये चाहिए नहीं आईटी डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ किसके साथ कम्युनिकेट करे, सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के साथ। और जो जो सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ कम्युनिकेट करे सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। So this means that IT department will able to communicate with only IT department. So all the routes of the sales department should be, जब ये routes PC1 के पास आएंगे तो ये क्या करेगा उन routes को, ये उनको ब्लॉक करेगा। जब ये routes सारे R1 के पास आएंगे, ये routes R1 जो है, जब IT डिपार्टमेंट उसको कम्युनिकेशन की कोशिश करेगा टू कम्युनिकेट विद द सेल्स डिपार्टमेंट, R1 उन चीजों को ब्लॉक करेगा। So how to block that? How to deny that traffic? To deny that traffic using the extended ACL. Now we will configure same lab on the Cisco packet tracer. So we'll open the Cisco packet tracer now. So you will be able to understand how to activate the ACL in R1. हम किसी भी एक राउटर पे ACL एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहले हम राउटर के पास जाएंगे, तो राउटर के पास R1, ये है R1 राउटर। इसी तरह जिस तरह हमने अभी R1 राउटर है, ओके, दूसरा राउटर उठाएंगे हम, इसको रखेंगे हम R2 नेम, तो विल चेंज द नेम। तो R1 को देंगे हम R1 राउटर R1, इसको सेव करेंगे एंड राउटर R2। ओके, नाउ we'll get the switch here, switch 1 and switch 2। उसके बाद ना 2 pieces, PC1, PC2, PC3 and PC4। ओके, तो पहले मैं सबसे पहले PC को कनेक्ट करूंगा, F0 और PC1 को स्विच के साथ कनेक्ट करो एंड PC2 को इस स्विच के साथ एंड इसको इसके साथ, और राउटर को कनेक्ट करो F00 स्लैश से, और तो ओके, उसी तरह F01 will be connected to F01। तो ये है, तो मैंने आपको क्या बताया था पहले, हम यहाँ इस तरफ से दो VLAN बनाएंगे, VLAN 10, और उसको हम VLAN 10 उसके साथ PC0 कनेक्टेड होगा, और उसका IP एड्रेस को 192.192.12.0/24। और एक VLAN बनाएंगे VLAN 11, उसके साथ PC1 को कनेक्ट करेंगे, उसका जो IP एड्रेस होगा 193.1.12.0/24। इन द सेम वे विल अप्लाई हियर, हम दो VLAN बनाएंगे इस तरह भी, VLAN 12, उसके साथ PC2 को कनेक्ट करेंगे, उसका जो IP एड्रेस होगा 194.1.12.0/24। एक और VLAN बनाएंगे VLAN 13, PC3 उसके साथ कनेक्ट करें 195.1.12.0/24। ओके, दो VLAN बनाएंगे और इसके जो IP एड्रेस होगा 200.1.12.0/24। तो मैंने आपको कहा, मान लो ये एक आईटी डिपार्टमेंट है, समझाने के लिए आईटी डिपार्टमेंट, और ये मान लो सेल्स डिपार्टमेंट, ये भी इसका आईटी डिपार्टमेंट है, तो ये इसका आईटी डिपार्टमेंट है, और ये सेल्स डिपार्टमेंट R2 का है। तो इस तरह हमने इसको, ओके, सबसे पहले हम क्या कहाँ जाएं, एंड हम कौन सा डायनेमिक प्रोटोकॉल चलाएंगे, ARGRP
हैंड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इतना तो पता होना चाहिए आपको, या जीआरपी। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे इधर हम, सबसे पहले हम स्विच को एक्टिवेट करेंगे। स्विच जो है ये स्विच वन है, जो मैंने पहले कहा SW1 स्विच वन, एंड स्विच वन मैंने इसको नेम दिया, इट इज योर चॉइस। तो ये है स्विच टू, इसे क्या होता है, इजी होता है स्विच टू। नाउ उसके बाद में स्विच वन के पास जाएंगे हम, तो कॉन्फ़िग करेंगे, कॉन्फ़िग। सबसे पहले क्या बनाए, दो वीलैन बनाएंगे, वीलैन 10 एंड वीलैन 11। एग्जिट, इसके पास दो पोर्ट्स है, इंटरफेस F0/1। जो इंटरफेस वन है ये किसके लिए है, ये वीलैन 10 के लिए, तो हम करेंगे को स्विच मोड एक्सेस। ओके, स्विच पोर्ट जो एक्सेस है ये हम किस वीलैन के लिए देंगे, 10 के लिए। ओके, इसी तरह दूसरा पोर्ट क्या, इंटरफेस F0/2, ये भी स्विच पोर्ट है, ये भी किस विलेन के लिए, जब हम किस विलेन के लिए है, ये 11 विलेन 11 के लिए है, तो हम करेंगे इसको मोड एक्सेस। तो स्विच पोर्ट जो एक्सेस है ये किस विलेन के लिए है, विलेन है। हाँ, जो F03 है, जो F03 है, F0 जो स्विच का F03 पोर्ट, ये किस विलेन के लिए, दोनों विलेन के लिए। तो जब कोई पोर्ट दोनों विलेन के लिए होता है तो वो पोर्ट क्या बनता है, ट्रंक पोर्ट। तो इसको कहते हैं स्विच मोड ट्रंक। एग्जिट, तो एग्जिट करेंगे फिर से, तो इसको हम सेव करेंगे और शो करेंगे वीला। अगर देखोगे आप, जो दो वीलन हमने बनाए हैं, एक्टिव वीलन 10 F01 के लिए है, वीलन 11 जो है वो F02 के लिए। स्विच का यही फंक्शन है। तो उसके बाद जाएंगे हम इस स्विच पे, इसको भी दो वीलन बनाएंगे इसी तरह जिस तरह हमने इसमें बनाया। इसमें हम कौन से दो वीलन बनाए हमने, तो वीलन 12 एंड वीलन 13। तो एग्जिट करेंगे, इंटरफेस F0/1, ये किस वीलन के लिए है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो स्विच पोर्ट जो एक्सेस वीलन है ये वीलन 12 के लिए है। एग्जिट, जो इंटरफेस F0/2 है, ये भी किस वीलन के लिए है, ये है 13 वीलन के लिए। तो इसका मतलब इसका मोड भी क्या है, एक्सेस है। और स्विच मोड एक्सेस किस वीलन के लिए है, 13 के लिए। एग्जिट, मगर जो इंटरफेस F0/4 है, इट इज सेम, इट इज फॉर बोथ द व्हील, व्हेन एनी पोर्ट इज फॉर बोथ द व्हील, दैट मींस इज, जो इसका मोड होता है मैक्सिमम, दैट इज ट्रक मोड। तो शो वीलन करेंगे इधर, तो आपको ये यहाँ पर पता चलेगा वीलन जो 12 है, तो जो वीलन 12 है वो F01 के लिए, जो वीलन 30 है वो F02 के लिए। ये था, हमें स्विच का काम हो गया। इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर, हम जाएंगे राउटर 1 पर। राउटर 1 पर क्या करेंगे हम, कॉन्फ़िग ऐप इंटरफेस F0/0 नो एसएच। हमें पता है जो राउटर है ये स्विच से कनेक्टेड है, मगर राउटर के साथ एक ही पोर्ट है, दैट इज F0/0। But as we know that in switch we make two VLANs. That is, we make switch as to work as for two networks. But how can we, if there is only one port, how one port can be used for two networks? It is used by subdividing the one port into the sub interfaces. So we will convert uh, F0/0 port into sub interface. That is, one interface will be 0.10. It is for VLAN 10. Then we encapsulate it. We will give it this interface. This sub interface will be given to VLAN 10. You can see here sub interface. And now provide the IP address. IP address 192.1.12.1.255.255.255.0. In the same way, we will get other sub interface 0/11, encapsulate protocol with 11. Then give IP address 193.1.12.1
1255.255.255.0, no as such. So if there are three VLANs, so you can make three sub interface. If there are four VLANs, you can make four sub interface. So this process, this is called a router on stick model. Now next, there is under interface F0/1, that is this interface. This interface will connect between the two routers. That is F0/1 IP address will be 200.1.12.1255.255.255.0, no as such. तो राउटर EIGRP हम चलाएंगे, 100 चलाएंगे, नो ऑटो समरी एंड नेटवर्क कौन कौन सा नेटवर्क हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं 192.1.12.0 ये नेटवर्क भी 193.1.12.0 ये नेटवर्क भी एंड 200.1.12.0 ये नेटवर्क। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस IT डिपार्टमेंट को हम अपना जो है डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसको हम एड्रेस देंगे 192.1.12.2। इसका जो गेटवे होगा वो राउटर का IP एड्रेस होगा 12.1। Now you will be able to see it will ping the router ping 192.1.12.1. So it reply comes from router. So now in the same way will you provide IP address on PC1 193. Because this PC related to the sales department, that is 193, that is VLAN 11 193.1.12.2 193.1.12.2 and the gateway will be the IP address of router. In the same way, they will communicate with also IT department 192.1.12.2. So reply comes from. So now in the same way, we'll go route 2. So in route 2, 12.3, 195.1.12.2. So here you will see. Okay. Now this is the PC3 and this is sales department that is related to PC3. Now this is PC0 related to IT department of R1. Now if we ping the IT department of R1 from sales ping 10.0.0, sorry, ping 192.1.12.2. So it is communicable with the IT department. In the same way, IT department communicable with 194.1.12.3. It is ping AC. Now, so as such, IT department is able to communicate with the IT department as well as sales. But what we want now, we want that IT department should communicate only IT department. So this department should be able to communicate with only this department. In the same way, this department should be able to communicate with only this department. So how it is possible to deny or allow only traffic through routers? It is possible only when we activate the extended ACL. Now we are going to the topic that is the extended ACL. So config F. So we will here access list, then we will. So you see that 1 to 99 access list 1 to 190 are those access lists which are called standard access list. But above 99, that is 100 to 199, these are called extended ACL list. So we had to apply this ACL list whose number is between 100 and 199. So if we write here 120,
That is the extended ACL, extended access list. Then if we again, so it will here say that deny or permit. So we have to deny that traffic. Which traffic I have to deny? So deny. Then again, IP. What you have to deny? EIGRP, ICMP, IP. We have to deny only this time IP. IP. Then AB source address. Source address is the address of IT department. That is 192.1.2l.0. That is 0.0.0255. That is the wild record mask you have to write. Then other is the destination. Destination is 195.1.12.0 0.0.0.255. And after that, what you have to write? You have to write access list 120 IP permit. And other than this IP address, you have to permit those IPs. Permit IP any. Okay, exit. Now we have to apply this access list where? Now we have to apply this access list on the ports, and on the ports where the data, where the traffic is enters or it is sent to other routers. So there are two ports here, F01, F0/0. It is your choice whether you apply F0/1 or you apply F0/0. So I will apply on F0/0. Config F0/0 interface F0/0 IP access group with IP access group. Which group it is? 120N. So this means that there are two types, in and out. But I say IC access group 120 in, and the traffic which comes inside the route inside this port F0. So you have to apply the access list on that. That is this. Now, so if I get the sales department here again, if I ping the IT department, the IP address of IT department of R1 is ping 192.1.12.2. You see, what is happening there? Okay. Oh, sorry, we had to apply on the sub interface. I'm very sorry. We had to apply on sub interface. That is sub interface F0/0.10. Because this 10 is related to the IT department, VLAN 10. So IP access group 120N. Now you see, oh, again, if I ping, so it will time out. It is impossible to communicate with IT department. So 192.1.12 is unable to communicate. This PC3 is unable to communicate with IT department. So in the same way, if IT department can communicate with from this pin 195.1.12.3, it says destination host unreachable. So one thing is done, that this IT department is unable to communicate with sales department. In the same way, we'll make another extended ACL list that to deny that traffic from this IT department or this sales department. So we'll again make one router R1. So you can apply the any of the routers. You can apply access list on R1 router. You can apply the extended list on R2. So it is your choice. Now config, I will make other access list 125. I will name it 125. Access list 125. What you have to do, deny your traffic IP. Which traffic you have to deny? Source IP. What is the source IP address? 193.1.12.0.0.255. And then what is the destination IP address? 194.1.12.0.0.255. Okay. Access list 125. Permit IP any IP any. Okay, exit. Now what I have to apply the on the interface. That interface is sub interface. Which interface is that? F0/.20/0.20.
12, 0.11. This is the sub-interface for VLAN 11. Now we have to apply on this group, IP access group 125 in. Now you will see it will be enabled. Now this sales department will be unable to communicate with IT department of R2. If I ping here, ping 193.194, 194.1.12.3. So it says destination host is unreachable. In the same way, if I here communicate with sales department here of R1, the IP address being 193.1.12.2. You see, timeout. Is it possible that PC2 will communicate with PC0? Yes, because the IT department is able to communicate with IT department of R1. So, okay. Is it possible? Yes. 192.1.12.2. Yes. You see, this IT department of R2 router is able to communicate with IT department of R1. In the same way, PC3 will be able to communicate with PC1 of R2, that is sales department with sales department. The ping 193.1.12.2. You see here. Reply comes from PC1. So this level only about the to apply the extended list, how to configure the routers using the extended list. Thank you.